So we'll go for phasor diagrams. Phasor diagrams बोले तो क्या है? Nothing but simply it is a anti-clockwise rotating vectors are called phasor diagrams. Anti-clockwise rotating vectors. इसके बाद में learn करेंगे. And the length of the arrow represents the peak value quantity, and its projections on x and y axis gives the instantaneous values. Okay. So draw karo, I will explain. So anti-clockwise rotating vectors are called phasors. And the length of the arrow represents the peak value of quantity, and its projections on x and y axis gives the instantaneous values. So anti-clockwise rotating vectors. आपको phase means generally, अब suppose मान लो I is equal to I naught sin omega t. Phase means sin के बाजू में जो भी है that is called phase. Is phase. Okay. So हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे इसका, देखो एक एक का फेजर डायग्राम. Draw the phasor diagram for I is equal to I naught sin omega t. Okay. So always you have to draw x-axis and y-axis. X-axis and y-axis. इसका phase is how much? Omega t is a phase. So anti-clockwise rotating vector. So anti-clockwise में I have to rotate omega t like this. And this length of the arrow is a peak value. Peak value is how much? I naught. So this is I naught. This is a phasor diagram done. तो फेजर डायग्राम मींस एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर. इसका फेज कितना है? ओमेगा टी. सो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाके पीक वैल्यू, द लेंथ ऑफ द एरो, देखो इधर, द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू. सो द एरो रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू इज आई नॉट. ओके. तो एंड इसका प्रोजेक्शन इफ यू टेक, इसका प्रोजेक्शन आई नॉट का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? आई नॉट कॉस ओमेगा टी, एंड इसका प्रोजेक्शन विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी. देखो इसका प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द सेम थिंग ओनली, आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो दैट ओनली टोल्ड हियर. देखो peak value, its projections on the x and y axis gives the instantaneous value. So इसका projections will gives the instantaneous values of that curve. So आपको simply you draw this one. This is nothing but phasor diagram, x and y axis. Next one. Suppose मान लो इसका ड्रॉ करेंगे. इन द वन डायग्राम ओनली वी हैव टू ड्रॉ phasor diagrams. Okay. So देखो x axis, y axis. Okay. Now tell me इसका phase is कितना है? ओमेगा टी. So एंटी क्लॉकवाइज जाके ओमेगा टी जाके we have to put the magnitude E naught. E naught. Anti-clockwise rotating vector is nothing but E naught. Okay. I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2 में what is the phase कितना है? Here इसका तो हो गया. Now इसका क्या है phase का? Omega t plus pi by 2. Okay. So omega t anti-clockwise जाके उधर से कितना जाने का? Pi by 2 जाने का. So from this you have to go 90 degrees. So this is peak value is how much? I naught. This is nothing but phasor diagram. And in this may who is leading? Tell me, current voltage. Who is leading? Who is leading? मतलब कौन फेज किससे ज्यादा है, कौन ज्यादा है? करंट आई नॉट, पाई बाय 2 लीडिंग. सो हियर राइट डाउन देयर, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. ओके.
चलो नो इसका ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम. So x axis, y axis. So anti-clockwise rotating vector is called as phase. So omega t जाके will put the length of the represents the magnitude E naught. Is nothing but anti-clockwise rotating vector. First one done. Now क्या करेंगे? ओमेगा टू जाके माइनस पाई बाय टू जाने का. सो इधर से ओमेगा टू जाके we have to go माइनस राइट. सो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का. ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का. So this is the peak value is how much? I naught. 90 degrees. Okay, this is a phasor diagram for both. Okay, and इसका who is leading? Who is leading? Who is E naught. lagging? हाँ E naught is leading, I naught is lagging. लिखो. Current lags voltage by pi by 2. Current lags voltage by pi by 2. Current terms में we are telling. Current lags voltage by pi by 2. स्कूल में सुना होगा ना लैगिंग लीडिंग लीड हो रहे लैग हो रहे पूरा कहानी पूरा वही है ना. आपको इंडक्टेंस में कैपेसिटेंस में याद है कुछ? इंडक्टेंस में क्या होगा विच इज लीडिंग. कैपेसिटर में क्या होगा विच इज लीडिंग और लैगिंग. एनी आइडिया? नहीं. तो उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वर्ड है याद रखो सिविल. CIVIL याद रखो सिविल. ओके. C is capacitor, L is inductor, and I and V are current and voltage. C is capacitor and L is inductor. You are walking from here to here. ऐसा walking हो रहा है. इन कैपेसिटर में फर्स्ट कौन आया? करंट या वोल्टेज. When you're walking from here to here, first current is coming. So current leads voltage by pi by 2 in the purely capacitor. Current leads voltage by pi by 2 in a purely capacitor. Okay. Now you're walking from here to here. ऐसे जा रहा है. Now पहले वोल्टेज आया बाद में करंट आया ना. I can write like this. इंडक्टर में करंट लैग्स वोल्टेज by pi by 2. ओके. सो लिखो कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज by pi by 2. करंट लीड्स वोल्टेज by pi by 2. एंड इंडक्टर में करंट लैग्स वोल्टेज by pi by 2. करंट लैग्स वोल्टेज by pi by 2. एंड प्यूरली रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज होगा. करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज. लिखो इन प्यूरली रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज. इंडक्टर में करंट लैग्स वोल्टेज by pi by 2. रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज. ये बैठ करो आपको आगे में बहुत चूज होने वाला है कि एसी सर्किट्स में बोल सकते हो. प्यूरली वी आर टॉकिंग अबाउट बाद में कॉम्बिनेशन देखेंगे बट प्यूरली रेजिस्टेंस प्यूरली कैपेसिटर प्यूरली इंडक्टर में फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके. टेल में शिवंगी बोल सकते हो इन ए प्यूरली कैपेसिटर विच वन लीड्स विच वन. बोलो Current leads voltage by pi. current leads voltage by pi by 2. Okay, or voltage lags current by pi by 2. Okay. Now tell me Sriram, in a purely inductor में which leads voltage or voltage leads current or current leads voltage. When you're walking from here आपको फर्स्ट वोल्टेज आ रहा है बाद में करंट आ रहा है. सो करंट लैग्स वोल्टेज by pi by 2. ओके. सो इंडक्टर में करंट लैग्स वोल्टेज by pi by 2. कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज by pi by 2. Is that thing? Are you understood, right? चलो. Now we'll talk about the AC circuits में. First one is purely resistance circuit. Purely resistance circuit. Okay. देखो. Now we will talk about purely resistance circuit का. Okay. हाँ. So इसका we are seeing the current and voltage का relationship क्या है. Okay. So this is a purely resistance circuit and I am giving the AC voltage. Okay. Purely resistance circuit में I am giving the AC voltage. Voltage always we are giving V is equal to V naught sin omega t.
V naught sin omega t is the voltage which is giving. Okay. Now either what is the phase of voltage here? What is the phase? Sin के beside में जो भी है that is called phase. Omega t is the phase. Okay. Our intention is to calculate the current. उसका phase check करने वाला है. So you know already current and voltage are in the same phase in a purely resistance. Okay, that we'll see. We are deriving now. Okay. Now देखो. Here the current is flowing here plus and minus. Right? Instant current. We are thinking of instant current. At that time, उस direction में. Okay. I am applying KVL in the complete equation. KVL. Same thing will apply for inductor, capacitor, ऐसा ही. Okay. Now KVL apply कर रहा हूँ. So KVL apply करने से tell me what is the KVL says? Summation of delta V is equal to 0. This is a KVL. Okay. And you remember the sign conventions? When current and path are in the same direction, resistance में minus IR, opposite direction में plus IR. And battery में तो minus to plus we are going, it is plus. Okay, chalo. From here we are walking. From here to here we are walking. Tell me, minus to plus you are going. So it is plus, right? So V naught sin omega t. And current and path are in the same direction. Minus IR is equal to 0. Right? From this I want to calculate the current. So I is equal to how much from this? V naught sin omega t by R. And V naught by R को I will call one constant which is called I naught. I naught boring. So I is equal to I naught sin omega t. Right? Where I naught is what? Ohms are right? V equal to IR, I equal to V naught by R. V by R. Right? Now you got current. देखो. Now tell me what is the phase of current here? Omega t. What is the phase of voltage? Omega t. So in a purely resistance में current and voltage are in the same phase. लिखो. In purely resistance में current and voltage are in the same phase. या नाउ इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करो. फेजर डायग्राम ड्रॉ करो. किसका? V is equal to V naught sin omega t I am giving, and current is given as I naught sin omega t. ड्रॉ करो. Anti clockwise rotating vectors are called phasors. Phasor diagram ड्रॉ करो. You will understand same phase means क्या है, you will understand now. धीरे धीरे. And I naught is V naught by R. So phasor diagram ड्रॉ करो. So इसका phase is omega t. So anti clockwise जाके omega t जाके I am putting one vector which is V naught. Peak value, right? V naught. इसको क्या है, इधर भी ओमेगा टी ओनली. सेम डायग्राम में ड्रॉ ओमेगा टी ओनली. आई नॉट ड्रॉ करेंगे. यू टेल मी आई नॉट का लेंथ इज स्मॉल, वी नॉट का लेंथ इज स्मॉल. किसका? आई नॉट इज वी नॉट बाई आर. सो छोटा लेंथ है, छोटा है कंपेयर टू वी नॉट. सो हम लोग क्या करेंगे, आई नॉट का इधर डालेंगे. आई नॉट इज द डायग्राम. करंट एंड वोल्टेज सेम फेज. ओके. नाउ इसका फेज सर डायग्राम देखो. वेव डायग्राम ड्रॉ करेंगे. वेव डायग्राम. वेव डायग्राम देखो. देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड हियर बाय सेम फेज बोलते क्या है. यू विल अंडरस्टैंड एट थीटा एंगल यू आर पुटिंग. ओके 0 degrees and 90 ऐड करो. pi by 2. pi by 2 plus 90 is pi. 180 plus 90 is 270, that is 3 pi by 2, and that is 2 pi. Okay. Now sine ka, you tell me what is the equation we got? V is equal to V naught sin omega t. I is equal to I naught sin omega t. Okay. Now sine waveform मालूम है ना. Sine 0 0, sin 90 is 1, sin pi is 0,
270 is -1, sin 2 pi 0. So if I join, ये वाला किसका ग्राफ है? V is equal to V0 sin omega t. Okay. Now here I equal I0 sin omega t. देखो इधर 90 I का magnitude will be less, right? So इधर 90 0 270 360. So I का graph will be like this. This is I is equal to I0 sin omega t. Now if you see carefully, what is meaning of same phase meaning देखो, both start with 0, both are going with maximum, both are going 0, -1 and 0. So that's why phase, same phase. Same phase means साथ साथ जिएगा, साथ साथ मरेगा, ऐसा रहेगा. So that is called same phase. Phase difference is 0. Okay. So resistance का done. So our intention, I told, right? Resistance, purely inductance, purely capacitance. RL, RC, RC करेंगे. Okay. ये RLC का क्या तो chapter 90% हो जाएगा पूरा. Okay. R is done. Now L also same thing we are going, same process we are going. Okay. Now purely network circuits. Now किसका याद है? I'll tell you. I'll ask you tell. In a purely resistance में, what is the voltage across the resistor? In a purely inductor में, what is the voltage across the inductor? EMF is how much? Inductor and current का इसमें voltage कितना है? When current is given, resistance is, what is the voltage drop? V equal to IR. वो मालूम, Ohm's law. V equal to IR. Voltage across resistor is IR. Now tell me what is the voltage across inductor? Sir, E minus E by 2m into L. E by 2, no, that is angular momentum. L is inductor either. Voltage across inductor. For inductor resistance, electromagnetic induction में भी done is all things. Electromagnetic induction में I told the difference between resistors and inductor. I'll do something. that will di by dt. So exam पूरा सब मिलके लिखो, आधा फॉर्मूला इसको, आधा फॉर्मूला उसको आएगा, सबका लिखो. E equal to L mod di by dt. सेल्फ इंडक्टेंस में वी डन दिस टॉपिक. L. So whenever Ohm's law कैसा याद रहेगा, इधर भी याद रखना पड़ेगा. E is equal to L di by dt is the formula for inductor. Inductor always oppose the change in current. Okay, always oppose the Lenz law use करके हम लोग we found the change in current, right? Okay. Now इसका भी same. Our intention is to, I am giving the voltage V equal to V0 sin omega t. Our intention is to find the current. Okay. So इधर phase कितना है? Omega t. Can you guess current कितना आएगा? I is equal to, in a inductor में, purely inductor में current क्या होगा? Civil में current lags voltage by pi by 2. So आंसर क्या आएगा मालूम है? I is equal to I0 sin omega t minus pi by 2. So आपको जो भी है वो कॉपी करके minus pi by 2 डालने का. That is the answer we'll get. Okay. But we are deriving. So इसका path ले लेंगे ऐसा clockwise, plus minus. You tell me, मान लो current is increasing. That is increasing. Oppose करने के बोले तो the battery should be like this, right? Plus minus EMF E I. मतलब इसका वजह से induced EMF will be this direction, right? Okay, because when you are going in a path में, we have to know the sign convention, plus to minus, minus to plus बोल के. ये आपको लिखना आने का. Since current is increasing, उसको oppose करने के लिए ये direction दिया. Okay. Now apply the KVL across the path and tell. So I'm applying KVL. So summation delta V is equal to 0. So minus to plus is V0 sin omega t. पहुंच है ना? बाद में plus to minus L mod di by dt. Our intention is to get the current is equal to 0. Is over. Total path we are taking equal to 0. Now calculate the I value. देखो V0 sin omega t is equal to L mod di by dt. So V0 by L sin omega t
dt is equal to di. To get current, integrate both sides. Integrate both sides. di का इंटीग्रेशन इज आई, क्या होगा, v नॉट बाई l कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में डालने का इंटीग्रेशन में ओमेगा. ओके, नो ये बाहर ले लो, माइनस v नॉट बाई ओमेगा l कॉस ओमेगा टी. इफ यू सी केयरफुली, इधर ये फॉर्मूला आपको v नॉट बाई आर जैसा लग रहा है ना बाजू में, v नॉट बाई आर, मतलब दिस एक्टिंग लाइक रेसिस्टेंस, दिस एक्टिंग लाइक रेसिस्टेंस. इन इंडक्टर में वी कॉल दिस एज इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस नहीं रहेगा, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. वी रिप्रेजेंट एज एक्सएल, एक्सएल से रिप्रेजेंट करेगा, इधर एक्सएल आएगा. ओके, सो I can write this, I is equal to minus v naught by xl cos omega t. And इसको क्या बोलते हैं, v naught by xl को I can represent as I naught. I is equal to I naught minus I naught cos omega t. But I want to compare with sin. Sin के साथ है ना, always you have to convert into sin. Then only you can compare the phase. इधर क्या था, sin omega t. इधर क्या है, cos आया. We have to convert into in terms of sin. Can you tell me how to convert in terms of sin? I is equal to I naught. I can write this one cos omega t को minus cos omega t को I can write as sin omega t minus pi by 2. Sin 90 minus theta is what? Cos theta. Since उल्टा कर दिया minus भी निकल जाएगा. Okay, तो मेरा so answer is omega t minus pi by 2. So now compare with this. So क्या होगा, current lags or leads finally. The current lags voltage by pi by 2. So always we are giving the voltage v naught sin omega t. Current directly आ जाएगा I naught sin omega t minus pi by 2. And very important here, xc is nothing but omega l. xc is omega l. Inductive reactance बोलते हैं omega l. ओके, तो ड्रॉ करो. फेज डिफरेंस तो मालूम है ना, 90 डिग्रीज. हाँ, तो उधर लिख लो करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2 इंडक्टर में. तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करो. V is equal to V naught sin omega t I given. Current how much you got? I naught sin omega t minus pi by 2. Got a done. इसका फेज इज ओमेगा टी, इसका फेज इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब नीचे आएगा. राइट, गॉट श्रीराम. मतलब ड्रॉ करो, नहीं तो आता है एक्स एंड वाई. सो ये ओमेगा टी जाके इधर वी नॉट एंड ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इधर, व्हिच वी ड्रू ऑलरेडी. ओके, दिस वाला फेजर डायग्राम. नेक्स्ट, नाउ सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी सीखो. सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में समटाइम्स इट विल हेल्प. सो सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, आई नॉट आई एम टेकिंग एज रेफरेंस. आई नॉट आई एम टेकिंग एज रेफरेंस. एंड नाउ टेल मी वोल्टेज क्या करेगा. V is equal to V naught sin omega t I given, right? I got current as I naught sin omega t minus pi by 2. Okay. Now I naught I took a reference. Voltage क्या करेगा, voltage leads current by pi by 2 in inductor. Civil में voltage पहले आएगा, voltage leads current by pi by 2. So V naught will be like this. This is not a phasor diagram. Just we are putting this diagram. I naught and V naught.
लैगिंग ऑलवेज एक्स एक्सिस में वी आर टेकिंग करंट, उसके रिस्पेक्ट में वी आर सीइंग द वोल्टेज. कैपेसिटर में नीचे आएगा सेम. नाउ लैगिंग का मीनिंग समझेंगे बाय यूजिंग द वेव डायग्राम. वेव डायग्राम हेल्प लेके वी विल अंडरस्टैंड लैगिंग बाय पाई बाय 2 इज व्हाट वी आर सीइंग. नाउ ड्रॉ द वेव डायग्राम. आते हैं ना, सेम थिंग का सेम बात. तो 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई. सो 90 क्या होगा, 90 90 is 1. Okay, 180 is 0 minus 1 2 pi. So graph will be like this. V is equal to V naught sin omega t. And current का It will start from the negative x-axis at -1 and then it will go up to pi by 2. yes, 1 minute. now cos का कैसा आएगा देखो. V is equal to V naught sin omega t. I drew. I का I got as I naught sin omega t minus pi by 2. So instead of sin I can write in cos में. cos में कितना था, minus I naught cos omega t. ऐसा है ना, इसी को we wrote as this one, right? cos को now check करो. cos sin graph always start from 0. Okay, cos will start either above or below रहेगा always. Since it is minus, क्या होगा, it will be below. So इधर से start होगा. So cos 90 0, cos 180 is कितना होगा, -1, right? So minus of -1 plus, so ऐसा रहेगा. And then again it is 0. कितना रहेगा, cos 270 so much, cos 270 is 0. and बाद में ऐसे आएगा. तो मैं ये वाला cos का I is equal to minus I naught cos omega t. तो मैं cos का ग्राफ either above or below start होगा. Since it is minus, I am starting below. And we are substitute the value. Omega t का value substitute करो always. 0, 90, 270 substitute किया तो we'll get the answer. We'll get the graph. Now if you see what is the meaning of lagging means, देखो voltage was 0, current is maximum. Voltage जब maximum आया, then current is coming to 0 position. Okay, by pi by 2. And voltage जब 0 आएगा, then the current is going maximum. So पीछे 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 आ रहा है. Current lags voltage by. Voltage आगे निकल गया. Voltage जब maximum हो गया, current 0 हुआ. वो पीछे है. बाद में voltage जब नीचे 0 आया, ये maximum जाएगा. So पीछे पीछे आ रहा है. By seeing the wave diagram also, you should decide which graph it is. Inductor, capacitor, resistance. Okay. So current lags voltage by pi by 2. That's why it is a inductor. Okay. On the video, Sathik. Okay. Now we'll talk about the inductive reactance, which is XL. XL आया ना? XL क्या था? We know the formula. V I naught is equal to V naught by XL. And XL is omega L. I want to draw the XL and the frequency का relationship. XL is 2 pi FL. So if it direct relation, right? XL is proportional to F. So frequency का graph will be like this. XL and frequency का graph is straight line in a purely inductor. And इसका slope बोल सकते हो. इसका slope, what is the slope gives? देखो, if you compare, x axis में frequency is there, y axis में XL is there. So I can compare with y equal to mx. So x को frequency छोड़ के slope कितना होगा? 2 pi L. So slope gives m is equal to 2 pi L. Sometimes they give the graph slope is equal to 1 by 2. That time inductance कितना ऐसा पूछेगा. So you have to find this one, x equal to f, 2 pi f use करके. XL आए, resistance नहीं आएगा, but SI units of XL is ohms only. Resistance जैसे act होगा. Inductance में we should not say resistance, उसको reactance बोलते हैं.
दैट विल बी कमिंग ओनली इन एसी में. एसी में रिएक्टेंस बोलते हैं. ओके, तो डीसी में कितना होगा टेल में? डन. डीसी में बोलो, एक्सएल विल बी हाउ मच वैल्यू डीसी में? डीसी में फ्रीक्वेंसी हाउ मच? डीसी में there is no oscillations, right? So constant में ना, zero. When f is 0, xl is omega l 2 pi fl, so xl is 0. Okay, that means what is the conclusion from this is, लिखो, in DC circuits inductance provides no resistance to constant current. Inductance provides no resistance to constant current. That's why inductance always oppose the change in current. कांस्टेंट करंट को अपोज ही नहीं करेगा. भाई रिएक्टेंस इज 0. डीसी में काम ही नहीं करेगा इंडक्टेंस जैसा. सो प्यूरली इंडक्टर का कहानी डन. प्यूरली इंडक्टर में व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू नो, दैट आई नॉट का फॉर्मूला क्या है इन प्यूरली इंडक्टर में? वी नॉट बाई एक्सएल. ओम्स लॉ ओनली. वी इक्वल आई इक्वल वी बाई आर. आर इज नथिंग बट एक्सएल इन इंडक्टेंस में. VRMS, IRMS, VRMS का relationship is also right. If this is right, this is also right. Okay, देखो, no questions करेंगे. तो मेरा फेज मीन्स साइन के बाजू में जो भी है यू आर टू सब्स्टिट्यूट एंड माइनस पाई बाई 2 ऐसा करने का. करंट लैग्स वोल्टेज मीन्स. चलो, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन दिस. अंडरस्टूड? प्यूरली इंडक्टेंस में वोल्टेज देगा, करंट को आपको एक्सप्रेशन फाइंड करने का. ओके, चलो. The voltage they given as E is equal to 100 sin 100 pi t plus pi by 3. That is the voltage. They can give anything bracket में. Is applied across a purely inductor. L is equal to 2 by pi Henry. Find the expression of alternating current. मतलब I का expression instantaneous current चाहिए. Instantaneous current चाहिए. So can you tell me directly? This is the voltage they given. Current कितना होगा? अब बोलो श्रीराम. The voltage they given supply. इंडक्टर में क्या होगा? करंट लीड्स वोल्टेज पे पाइवेट हुआ, लैग्स करंट पे वोल्टेज पे पाइवेट हुआ. सिविल में पहले वोल्टेज आएगा, बाद में करंट आएगा. सो करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. ओके, सो फॉर्मूला क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, जो भी फेज है वो डाल दो, 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2. करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. जो भी फेज है उससे लैगिंग है पाई माइनस पाई बाय 2. ओके, दिस इज द करंट आई वांट. नाउ सप्रेसर फाइंड करो, आई नॉट फाइंड करो, आ जाएगा. यू फाइंड आई नॉट एंड सब्स्टिट्यूट टेल आंसर. $200 sin 100t minus pi by 6. What I not value? I not का formula is what? V naught by omega. V naught is how much? 100. Oh. करो. So they compare. V is equal to V naught sin omega t plus 5. Omega t is omega value no 100 pi. V naught का value no 100. तो साइन के बिसाइड वाला जो भी इस तरफ वाला है V naught है, पीक वैल्यू. V naught by XL. XL का formula already you know. XL is omega L. Omega is how much comparison में? 100 pi. 100 pi into L कितना है? 2 by pi. So it is 200 is XL. तो सब्स्टिट्यूट करो इसमें. V naught is 100 by 200. That is 0.5. So therefore I is equal to 0.5 sin 100
pi t, 90 minus 30, right? So minus 5/6 is आंसर. So वोल्टेज उतना दिया तो करंट इतना आएगा, करंट लैक्स वोल्टेज पे प्लॉट. सो आपको ये लिखना आने का -π/2 बोल के, जो भी फेज है वो पूरा कॉपी पेस्ट करके -π/2 करने का. अंडरस्टूड? चलो ना करो. Find the maximum value of current when inductance is L is given, AC voltage is given. This one maximum current मतलब I naught चाहिए, I naught. What is given? AC source of voltage 110 volts. What is 110 volts? V naught, which one? VRMS. So जो भी voltage दिया है that is VRMS is equal to 110 volts. Frequency 70 hertz. And L value also, inductance value is 1 Henry is given. He's telling to find I naught. Decimal में want answer. Is it 1.111? No, wrong. I naught चाहिए, I naught. साथ ही बोला. I naught का फॉर्मूला है ना, V naught by XL. So XL फाइंड करो, V naught फाइंड करो, आ जाएगा. I naught is V naught by XL. RMS voltage is given, right? How to find the V naught? We know the relationship, right? V RMS is equal to V naught by root 2, right? So therefore, V naught is equal to V RMS into root 2. So 110 into root 2 by XL. 0.33 something. कितना? 0.33. Yes, 0.35 is answer. F is given 70 hertz, right? So F is given, L is given. So substitute, we'll get the answer approximately as 3.3, 0.35 amperes. This one will get. We have to convert RMS to peak value because V naught चाहिए. We know the relationship, right? V RMS is equal to V naught by root 2. Okay. समझ चलो नो करो, देखते हैं. करो. चैलेंजिंग क्वेश्चन देखते हैं, करो. I'll give options. Who will do first? I'll tell. Without copying करो. I'll give one chocolate.
नो सर्चिंग, नो सर्चिंग, सात्विक करो। Sir, 3 3 option A, 3.3. देखेंगे, ओके देखेंगे। 1 चॉकलेट का प्राइस है, जल्दी करो। शिवांगी बोलो। 2.3. ओके, और 2 ऑप्शन बचे हैं श्रीराम, यू कैन टेल सी एंड डी। चार्जिंग होता तो डी भी हो रहता तो 3 ही जन है ना ए बी सी में। श्रीराम नहीं आ रहा है? ओके, सो बेटा चेक करें किसको चॉकलेट मिलेगा, वो देखेंगे। ओके चलो, एक बिफोर दैट चेकिंग के लिए एक बार क्वेश्चन समझो मुझे। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट व्हेन द वोल्टेज सोर्स इज एट पीक वैल्यू? ओके राइट, क्वेश्चन वही है ना, इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए व्हेन द वोल्टेज इज एट पीक वैल्यू। ओके, यू टेल मी दिस इज अ प्योरली इंडक्टिव सर्क्यूट, प्योरली रेजिस्टेंस सर्क्यूट? टेल मी प्योरली, It's बोलो 0 because. देखेंगे। प्योरली नहीं, चांस गया। ओके, प्योरली इंडक्टिव सर्क्यूट राइट। इंडक्टिव सर्क्यूट में एक बार वेव डायग्राम देखो, वेव डायग्राम देखो, we drew the wave diagram, right? उसमें if you see carefully, when the current is, देखो, when the voltage is maximum, current is how much? X axis में current is 0, anywhere if your voltage is maximum current is 0, that is answer, खत्म। तो थोड़ा ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं ऐसा करने का। समझा? सो आंसर इज 0। यस, एक चॉकलेट बच गया। ओके चलो, हम लोग कैपेसिटेंस सर्क्यूट भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटेंस, प्यूरली कैपेसिटर सर्क्यूट का। ओके, इंडक्टर ऑल्सो डन, आई विल गो फॉर कैपेसिटेंस, सेम वे में करने का। ओके, प्यूरली कैपेसिटर सर्क्यूट। हाँ, नो टेल। सो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज करंट, दिस इज इंडक्टर करंट, एंड कैपेसिटर ये ई है, ये वी है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। हाँ टेल मी what is the voltage across inductor? Tell me, Sriram, what is voltage across inductor? देखा नहीं है चला, voltage across inductor L mod di by dt. What is the voltage across resistor? V equal to IR. Okay, now tell me what is the voltage across capacitor? Q by V. Wait, Q by C. wait, साथी will tell, साथी बोलो, voltage across capacitor, voltage across inductor, voltage across resistors। ये तो इजी है, voltage across resistor is ohms law, V equal to IR। Q by CV. वेरी गुड। C इक्वल टू Q by V, V इक्वल टू Q by C, राइट? ये वाला C इक्वल टू Q by V वाला फर्स्ट फॉर्मूला वी स्टार्टेड, एंड V इक्वल टू Q by C, दिस इज फॉर्मूला। ये वाला हम लोग यूज करेंगे फॉर कैपेसिटर सर्किट का, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज दिस वन, V इक्वल टू Q by C। ओके, नाउ सेम थिंग कैपेसिटर में आई एम गिविंग द वोल्टेज सोर्स V is equal to V naught sin omega t, I am giving in a purely capacitance में। सो ये चार्ज होगा प्लस माइनस, एंड प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा। इंस्टेंटेनियस करंट को आई मान लो, और इंटेंशन इज टू कैलकुलेट व्हाट करंट। कैन यू गेस करंट कितना होगा? इंस्टेंटेनियस करंट इज हाउ मच? इंस्टेंटेनियस करंट इज इन कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज by 2, सो इट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। अच्छा, okay, now we will because we have to know we have to get the current, right? Charge we will find. So from this we know this one, C is equal to Q by V, Q is equal to CV, and Q is nothing but di by dt। C into V is के जगह में V naught sin omega t। This is a phase I am giving, omega t is the phase।
I want to see current. Now from this I can do the some integration वगैरह कर सकता हूँ ना, or I is equal to dq by dt. Oh sorry, we are going to get current, right? Sorry, we are to get current, right? So charge कितना है टेल में, q is equal to c into v के जगह में v naught sin omega t. Current is what? Current is dq by dt. खत्म. तो डिफरेंशिएट करने का देखो, सी वी नॉट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट. आई इज इक्वल टू क्या था, सी ओमेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी. now देखो आई कैन राइट लाइक दिस, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई 1 by ओमेगा सी. आई कैन राइट, बिकॉज देखो उल्टा क्या तो ओमेगा सी आएगा, ओमेगा सी आ जाएगा. सो 1 by ओमेगा सी आई एम राइटिंग कॉस ओमेगा टी. अंडरस्टूड, राइट, क्लियर. 1 by ओमेगा सी इज नथिंग बट ओमेगा सी ऊपर गया तो ओमेगा सी वी नॉट ओनली. नाउ इट इज लुकिंग लाइक रेजिस्टेंस वी नॉट बाय आर जैसे लग रहा है ना. उसको क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस में, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस nothing but xc. so therefore I is equal to I naught, I am taking as I naught cos omega t, where I naught is what, v naught by xc or v naught by 1 by omega c. xc is nothing but 1 by omega c. okay, but comparison में आपको sin में चाहिए, then only I can compare phase. so उसको again we are converting in terms of sin में. तो tell me sin of how to write in terms of sin में, I is equal to I naught. tell me sin में कैसे आएगा, sin 90 plus theta lies in second quadrant. second में sin is positive, right. उसका and sin का 90 and 270 trigonometric ratio will change. so therefore I can write as simply omega t plus pi by 2. so 90 plus theta is cos theta. cos को we are converting in terms of sin. now comparison में who is leading, current leads voltage by pi by 2. current leads voltage by pi by 2. Ashura, well done. नो आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लो. फेजर डायग्राम में V is equal to V naught sin omega t I given. Current I got as I naught sin omega t plus pi by 2. Right? So y axis, x axis, omega t angle जाके I got voltage as V naught. And current omega t plus pi by 2. So omega t जाके उधर से pi by 2. This is I naught. 9 degrees. This is a phasor diagram, which we already drew before starting. So current leads voltage by pi by 2. And voltage lags current by pi by 2. Anything is true. Okay, now simple representation करो. Simple way of representation में क्या था? I naught I am taking as reference. So voltage lags current by pi by 2. So downwards V naught. Voltage lags current by pi by 2. वो ऊपर आएगा इंडक्टर में, कैपेसिटर में नीचे आएगा डाउन. नाउ वेव डायग्राम इफ यू ड्रॉ कर सकते हैं वेव डायग्राम. साइन तो इजी है ना, 0 90 90 ऐड करो, पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई. so 0 91 180. so graph of this one is this one. so V is equal to V naught sin omega t. and current कितना था in terms of cos में, I naught cos omega t. देखो cos graph does not start with origin.
either above or below, since positive above होगा. Okay, above इधर start करेंगे. 90 में तो 0, 180 is -1, again 0, ऐसा रहेगा. Okay, so this is I is equal to I naught cos omega t. And you are seeing current leads voltage. First only maximum आ गया, voltage 0 आया. Current now 0 गया, then maximum जा रहा है. So पीछे 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 आ रहा है voltage. So current leads voltage by pi by 2. तो अभी कैपेसिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप पेन करो. कैपेसिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का XC. XC फॉर्मूला क्या है? 1 by omega c. 1 by 2 pi fc. So inverse relation. So frequency is ऐसा रहेगा. XC is inverse relation to frequency. Okay. So now for DC circuit find करो. For DC circuit कितना होगा? Frequency is how much? DC में frequency is 0. So XC will be how much? XC is 1 by 0 is infinity. XC is infinity. So if frequency is 0, XC will be 1 by 2 pi FC, right? Infinity, tends to infinity. So that means, लिखो the sentence that no current flows in the branch containing capacitor for constant current. Suppose in that branch में you have resistance and capacitor में, और अगर a DC pass किया तो no current flows in that branch containing capacitor for constant current. इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाला है. इसका कैपेसिटर हो जाएगा, वी हैव टू स्टार्ट RL RC भी स्टार्ट करने वाले हैं.